20th sum. The minimum energy required to remove an electron is called as. Minimum energy required to remove electron from photosensitive material is called as what? Yes, from theory, can you tell? It is called as what? Hello? Minimum energy required is called as what? Work binding. Work function. No, binding energy. Work function. Work function. Stopping potential for photoelectron. Stopping potential means related to kinetic energy, and kinetic energy is h nu minus work function. So depends upon frequency of the incident light. Yes, depends both on the frequency and material. So C is the correct option. Depends both on frequency and material. Let us see. 22. The photoelectric effect is described as ejection of electron when light of suitable wavelength falls on it. Wavelength means related to frequency. 23rd. In photoelectric effect, the current increases with increase in frequency. No. Depends on increase in frequency. Decreases. No. Depends on the frequency but does not depends upon intensity. No. Depends on both intensity and frequency. 24th. Magnitude of saturated photoelectric current depends upon. Saturated photoelectric depends upon. सर 23 का डी होगा ना? हाँ, डी लिखा है। सी क्या है? Does not depends upon frequency but depends only on intensity. दोनों में डिपेंड करता है ना। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो निकलेगा ही नहीं ना। ओके सर। So magnitude of saturated photoelectric current depends upon, ये must है. What is the answer of this? Saturated depends upon number of photoelectron and number of photoelectron depends upon intensity. 25. The photoelectric current in photodiode reaches a saturation value because the number of electron emitted depends upon intensity. 26th. Graph between which of the following two factors for photoelectric effects is a straight line? Intensity and photoelectric current is straight line. Intensity of radiation and photoelectric current, that is A. 27. Metallic surface ejects electron when exposed to green light of intensity I. Ejects electron when green light is incident, but not on yellow light. That means it should have wavelength less than green. इसके ऊपर नहीं हो रहा है तो it is, this is threshold. This is the meaning. Green is threshold. When exposed to yellow light of intensity I,
it is possible to eject the electron from the same surface. Metal surface ejects electron when exposed to green light of intensity I, but not of yellow light. So yellow light of some intensity which is more than I, no. We require less than that. कौन सा आएगा? D option? Yes, is it D? Yes, sir. Yes, correct. Because पहले ensure करना है frequency यानी कि wavelength, बाद में intensity का काम. Completed till 27? Yes, sir. Coming to 28. On increasing the intensity of on increasing the intensity of incident light on the surface of metal, the number of photoelectrons increases. B. A metallic surface has a threshold wavelength lambda 0, 5200. This surface is irradiated by monochromatic light of wavelength 4500. Which of the following statement is true? The electrons are emitted. First, will the electron be emitted? Yes. Lambda is less than lambda 0. So photoelectrons will be emitted. Photoelectrons will be emitted from surface having energy between infinity, 0, infinity, no, it can't be infinity. Between 0 and certain finite value. Between 0 and certain finite value. Finite maximum value. B. 29th option B. सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट क्यों होंगे? वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस सर. और फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता था, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थ्रेशोल्ड से तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is emitted varies with frequency as shown. The slope of graph is equals to h in Ke max versus frequency. This is y equals to mx plus c type, so slope equals to h, that is Planck's constant c. 31. Which is correct graph? B. Because if it is stopped here, when you extend it will be going to negative quadrant. D. 52. If E is Einstein's photoelectric equation, which is h nu minus work function, where nu is the frequency of incident radiation and W0 is work function. What is E in Einstein equation you are telling? What is this E? K max is h nu minus work function. E is nothing but maximum kinetic energy of photoelectron ejected.
The photoelectric threshold of metal is nu zero. Threshold is nu zero. When light of frequency 5 nu zero is incident, the maximum kinetic energy of photoelectron is, it is h nu minus h nu zero, h into 5 nu zero minus h nu zero equals to 4h nu zero. That is option 4h nu zero. Ankita and Rahul, today at 6 o'clock, are you comfortable? Sorry, at 7 o'clock? At what time, sir? 7 o'clock or 7:30 or 8 or 9? What time? Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है. I said either 6 to 7, 7 to 8 or 8 to 9. What time? सर मैं आपको घर पे पूछ के आपको बाद में कॉल करूँ क्या? तो टाइम आपको मालूम है, घर वाले को मालूम है? सर पापा का कुछ काम रहता है तो फिर लेक्चर में बैठने को नहीं होएगा ना, तो पापा को. अच्छा, चलेगा 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 चलेगा. हाँ. देखो, मुझे 5 to 6 एक लेक्चर है, दूसरा 6 to 7 है. उसके बाद आज मैं इवनिंग फ्री हूँ, तो आप मुझे कोई भी टाइम बोलेंगे टिल 12 o'clock चलेगा. ओके सर. अच्छा, और मैं आपके डैडी से ही बात करता हूँ फिर. ओके सर, चलेगा. हाँ, क्योंकि उनको बोलना है कि आपको काम अभी नहीं देने के लिए. ओके सर. हाँ ठीक है. 30 कंप्लीट दिस 33. Completed till 33. Ananya, after the lecture, wait 2 minutes. Okay, sir. Can I clear 33? Yes. Yes, sir. 34. Two metals M1 and M2 have work function as 5.1 and 1.7. The light of the wavelength incident is 3310 angstrom. Which of the following statement is correct? Only M1 will emit, only M2 will emit, both will emit, none of them will emit. How do we check who will emit? These are its energy given, work function. So can I say if this will give me energy greater than 5.1, then both will emit? Less than 5.1, only this will emit? Less than 1.7, nobody will emit. Correct ना? ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका एनर्जी ढूंढता हूं ना मैं, कितना है ड्यू टू दिस वेवलेंथ. वो दोनों से ज्यादा तो बोथ विल एमिट, दोनों से कम नन विल एमिट, एक से खाली ज्यादा तो दैट विल एमिट. हैव यू फॉलोड? Yes. So energy of photon emitted is hc by lambda. I am dividing by E, it will become electron volt. Have you followed this? Yes, followed this much? Yes, sir. What is hc upon E Ayush value? hc upon E value 12.43 into 10 raised to minus 7. Last class I gave you this. Yes, sir. Now 3310 angstrom convert into meter. It is 3.310 into 10 raised to minus 7. Okay. Yes, sir. So can I say this is approximately 4 electron volt? That means only M2 will emit. Not followed?
Yes, clear? Followed, sir. Okay. Please try to by heart this HC upon E value. तो फटाफट solve होएगा सब. Completed. Yes, sir. Come to 35. The photoelectric work function for metal surface. Work function is 4.125 electron volt. The cutoff wavelength means lambda 0 wavelength. So work function is hc upon lambda 0. If I divide by E, entire thing becomes an electron volt. So 4.125 equals to 12.43 into 10 raised to minus 7 upon lambda 0. So this is 12.43 into 10 raised to minus 7 upon 4.125. That is close to 3 into 10 raised to minus 7 meter, or close to 3000 angstrom. Let us check. 3000 angstrom. Close to that. Yes, option B. Option B. Done, sir. $37. So 36. 36. Threshold wavelength for metal having work function W0. Threshold wavelength is lambda. What will be threshold wavelength? Lambda 02 for the metal having work function double of lambda 0. So work function is hc by lambda 0. Work function of first upon second is lambda 0 of first, second upon first. So first work function W0, second twice, lambda 02 we want, lambda 1 is 1. So therefore new wavelength will be half of the original, lambda by 2, options. No need to solve also. Wavelength and work function are inverse. When this is doubled, this will become half directly also you can write. Copy 36.
Done, sir. Work function of metal is 4 electron volt. Work function is 4 electron volt. For the emission of photoelectron of zero velocity. Zero velocity means just emitted. So lambda 0 we want for zero velocity. Same concept. Work function is hc upon E. Lambda 0 will become in electron volt. So this is 4. This one is 12.43 into 10 raised to minus 7 upon lambda 0. So lambda 0 is 12.43. 10 raised to minus 7 upon 4. This is 3.10 into 10 raised to minus 7 meter, or 3100 angstrom unit. 3100, yes, options. तो वो बोल रहा था कि लगा नहीं है, पागल है क्या? वो बोल रहा था सर कुछ लगा नहीं है। सीताराम बोले कैमरामैन को बुलाना, वो तो चालू कर देगा। अरे मैंने उसको फोन किया था, तो बोला सीताराम जी बोले वो अपना जो ये डिस्प्ले है वो दीवार पे लगाएंगे तो अच्छा। बोला अच्छा, बोला उन्होंने दीवार पे लगा तो खाली हो जाएगा। तो बोला ठीक है। अभी वो मैं उस दिन जब गया था सर्कुलर तो उसके लिए दो प्रोजेक्ट तो बोला कि इसका लेके आओ क्या, तो क्या बोले कि मैं ला के रखता हूँ। सर को बोल क्या जी, तो उसका पीछे का जो आता है ना फिक्स आता है ना इसका बेसिकली। तो मैं बोला मैं लेके आऊँ कि अभी बोले नहीं सर से बात नहीं, उसने कुछ नहीं मेरे से बात किया। अभी खाली क्या बोला, इसी तरह हमने मुझे बोले थे कि उधर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बेस्ट आइडिया है, दीवार में पूरा टेबल गादी हो जाएगा। तो अभी सर आधा अधूरा चीज भी बता, उसको कुछ अक्ल नहीं है और जानबूझ के वैसा करता है, मुझे मालूम है। मैं बोला कि जो आपको सब बोल दिए कि जो कराना है सीताराम को बोल दो, तो हमारे पास पूछ करते हैं कि कब आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि हमको ये सब चीज करना है। थोड़ा दिमाग मंद बुद्धि वाला है, वो जो बोलेगा एक कान से सुनना है, कान से निकाल देना। तो पहले आपको जो बात करेंगे वही बात है। मैं उनको बोला कि अभी कपड़े का है और बाकी अभी आप टेबल खाली हो गया, आप अपना काम चालू करो। और सर से मेरा कल यही बात हुआ है कि जो नोटिस बोर्ड बनाना है और क्या क्या करना है मैं सबको सिंपल दिखा दूंगा, और उसी टाइम पे वो दोनों में आके करके देना। बाकी अपना काम आप चालू करो। ऊपर से खाली है, मैं बहुत मतलब अभी क्या कहीं जाना होता है ना, कुछ चीज भी खाने तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है ना, इसलिए मैं लॉकडाउन उसको रखा हूँ। तो दूसरा कैसे करोगे? नहीं बना वो चीज, कोई है अपने गांव वाला करना ऐसा अच्छा काम करना तब बताना, मैं उसको रखूंगा। ये आदमी रखा गर्दन में तलवार जैसे ही रहता है, क्या गलत करेगा क्या वो मालूम नहीं। तो अंदर भी सामान रखते हैं, उनको मैं बोला कि अगर कोई भी चीज होगा तो प्राइवेट सर को मत बोलो। मैं खुद ही सर को नहीं फोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर कुछ ऊपर नीचे समझ में होता है जब सर आपको बोलते हैं तो चीज हमको आप बता देता हूँ कि सर बोले सीताराम ये चीज ऐसा करना है, वो चीज तुम सर को बोलोगे, सर हमको बोलेंगे तो सर तुझसे नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और क्या सामने वाला क्या बोलता है वो भी समझ में नहीं आता है। और वो चीज आधा अधूरा बोलेंगे। अभी मैं क्या कैमरा लगाने का, अभी उस दिन आप पेपर लगा रहे थे तो मैं जितना लाइट के पॉइंट था सर वो क्लिक वगैरह मैं बोला था सब इसी में रहने देना, फिर वापस लगेगा और वो अपना हाथ पेपर लगा देगा। अभी आज गया तो उसका क्लिक नहीं था, तो बोले कि मैंने बोला आप जब वाल पेपर लगा तो राम नाथ के देखना चाहिए आपको कैसा लग रहा है, क्या रह रहा है आपको है नहीं। वो आदमी ने तो क्या बोले कि वो मेरा काम है, मैं उठा रहा है। मैं बोला वो आदमी काम का ही नहीं है, लेकिन मुझे ही मालूम है। लेकिन ऐसा मजबूरी, मराठी में कहावत है ना, अड़ला नारायण धरी गाड़वा से पाए, मतलब जो काम है तो गधे का भी पैर पड़ना पड़ेगा वैसा है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी, अगर लेडीज भी हो तो भी चलेगा या जेंट्स भी चलेगा, अगर आपके नजर में हो तो बताना मुझे। मतलब जो थोड़ा एक्सपर्ट हो और विश्वास वाला आदमी, क्योंकि कैसे बहुत बार ना फीस भी रहता है। नहीं वो मालूम है, सब विश्वास वाला आदमी चाहिए और उसको नॉलेज रहना चाहिए। मतलब इसका एक एडवांटेज है कि एक तो गधा है, पूरा गधा है। आज मेरे को गुस्सा लगा सर, ज्यादा इसलिए गुस्सा लगा कि अब सोचो आप एक ही दिन है ना, मम्मी को पूछो मेरा ब्लड प्रेशर रोज हाई होता है।
मम्मी बोलती है अगर दूसरा कोई रहता तो छोड़ देता। मैं बोला वो गधा इतना गधा है, 10 चीज वही बार बार बोल रहा हूँ तो भी मिस्टेक करता है। इतना अच्छे से समझाते हैं ये ऐसा करना वैसा करना, आधे घंटे बाद होगा। थोड़ा सा अगर मेरे से मिस्टेक हो जाता है जी, मैं तो कंटिन्यू सबके पास नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को मालूम है कुछ भी काम रहता है तो सब सीताराम को बोलते हैं सीताराम में करना है, आप कब आपको टाइम एक तरह का पूछते हैं, लेकिन हमसे मिस्टेक हो जाता है तो भी मैं एक से दोबारा कॉल नहीं सबके पास आज तक मैं किया। नहीं वो अपना ट्यूनिंग जम गया ना अपना वैसा। लेकिन क्या है कि अभी हमारे ऊपर पूरा सब छोड़े हैं, तो सब आपको अगर हमसे मिलेंगे तो बताएंगे कि हमारे को ऐसे करने का है। अब वो आदमी वो भी नहीं याद रहेगा तो फिर आंटी जी मैं अभी गया तो हमको मालूम है कि मेरे को कैमरा कवर लगा देना है। अरे अब सब उस हिसाब से वो तो छोड़ो, उधर जाके मैं पूरा साफ मैं किया, मैं उसको बताया कौन करेगा, बोला क्या मेरे को लगा सर सब होने वाला, तो पागल है क्या? अपन जिधर बैठते हैं वो जगह साफ करते हैं ना पहले। अभी सोचिए सर उस दिन वॉलपेपर का निकला था कचरा वाला था, वो आदमी को मैं बोला था उस दिन बोला था कि कचरा वाला मेरे ऊपर ऐसा फोल्ड ऐसे पूरा पड़ा रहा था, आज मैं इसको फोल्ड नहीं, गधे को निकालना ही हमें एकदम तंग आ चुका है। आज मैं रखा उसको फोल्ड करके के सामने रखा है मेरा। मैं आपको मतलब मम्मी को रोज बोलता हूँ तंग आ गया, लेकिन क्या अभी कोई मिल नहीं रहा है, और क्या जब तक हम नहीं तो ट्रेन नहीं कर पाएंगे ना। बराबर कोई मिला तो 5 दिन में भी रहने दो उसको समझाने के लिए। नहीं वो चीज अभी कोई अगर है तो आप बताइए, लेडीज भी चलेंगे जेंट्स भी चलेंगे। ठीक है मैं उसको अभी मैं बोला आप अपना काम चालू कर। और अभी आपको कुछ भी कभी भी आना होगा ना तो 1:30 to 2:30 मेरा मोस्टली ब्रेक होता है, या फिर अपना 9 बजे शाम। हाँ वो तो अगर हमको अगर ऐसा जरूरत अभी तो अपना जो काम चल रहा है इसके लिए मैं बोला उधर उनको बैठ के काम कर। और कल मैं देख के आया वो भी पीछे का वो सब ना, एक ये फ्लोरिंग देख के आ गया हूँ। फ्लोरिंग देख के वो देख एक 2x1 का है और 2x2 का है। 2x2 का तो वॉल में नहीं 2x2 नीचे फ्लोरिंग है। हाँ, और वॉल का 2x1 है। हाँ तो वही अच्छा। एक सिरामिक है और एक वर्टिफाइड है। हाँ और बीच में अच्छा मैं एक चीज पूछना वाला था, गीजर अपने को ले जाना है नहीं दूसरा करेंगे हाँ जैसे तो वही मैं बहुत कंफ्यूज था और मैंने उस दिन अपनी बात नहीं अभी आंटी जी वो शावर वाट जो हाथ से लेना रहता नहीं रहेगा वो सब डायरेक्ट ऊपर से। हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. सॉरी सब खर्चा बढ़ा दिए सर ने। टीचर फिर क्या होएगा? कैन यू सी दिस नेक्स्ट वन 38 one maximum velocity of electron of wavelength, actually it should be lambda, it is written while incident on the surface of metal of work function phi is. What is formula for maximum kinetic energy? H nu minus psi. Correct. H nu minus, here work function they are telling take as phi. That means half m V maximum square is H nu minus phi. So V maximum will be 2 times H nu minus phi upon, this we want in lambda, C upon lambda, C upon lambda upon mass. So 2 times Hc minus lambda phi upon lambda m in root. Just check where this proper formatting is given. 2 times Hc minus lambda phi m lambda root option. Come. So 38. Done, sir. Next one. A photon of energy 8 electron is 8 electron volt is incident on metal surface of threshold frequency 1.6 into 10 raised to minus 15 hertz. The kinetic energy of photoelectrons emitted is how much? Take H as 6 into 10 raised to minus 34 joules second.
if I get answer of work function in electron volt, then energy incident minus work function is kinetic energy. So work function is H mu 0 upon E in electron volt. 6 into 10 raised to minus, this should be plus 15 actually. 1.6 into 10 raised to 15. 1.6 into 10 raised to minus 19. So 6 electron volt. Therefore, K max is energy minus work function 8 minus 6, 2 electron. Right. 2 electron volt, which is nothing but D. Yes, done. Yes, sir. 40. For a certain metal, the threshold frequency is nu 0. If light of frequency 2 nu 0 is incident on it, the electrons will come out with maximum velocity of 4 into 10 raised to 6 meter per second. If light of frequency 5 nu 0 is incident on it, then what is maximum velocity of electrons? Yash, can you tell what formula we have to start with? Hello, Yash. Yes, sir. Which formula we should think for getting maximum velocity? Sir, for maximum velocity, we'll use K max. Correct. K max is h nu minus work function. So half m v maximum square. I'm writing v to avoid that writing part. H nu minus h nu 0. So if I take ratio, can I write v1 square upon v2 square will be h nu 1 minus h nu 0, h nu 2 minus h nu 0. This means v1 upon v2 the whole square is h 2 times nu 0 minus h nu 0, h 5 times nu 0 minus h nu 0. So v1 square upon v2 square is 1 h nu 0 upon 4 h nu 0. So v1 upon v2 is 1 by 2. Therefore v2 is 2 times v1. Therefore v2 is 2 into 4 into 10 raised to 6, which is 8 into 10 raised to 6 meter per second. They're not very difficult sums. If you have understood the logics, we can do very fast.
None, sir. Next. Hello, Aniket. Yes, sir. See, after completing semiconductor, now I will start with all those chapters which you have doubt. That first. Okay, sir. Part 1 वाला, तो आपका 12th भी हो जाएगा. Yes, sir. 41. The threshold wavelength for photoelectric emission from material is 5200 angstrom. Threshold wavelength. Photoelectrons will be emitted when this material is illuminated by monochromatic light radiation from where? Now, if this is threshold, so emission will take place. अगर इससे कम होगा तो ना? No? Yes, sir. This is visible range. This range is called visible. Yes. Then in electromagnetic spectrum, this right side will be after visible infrared and before visible ultraviolet. Is it correct? Hello? Yes, sir. तो visible में ये lambda 0 visible का range you are knowing? It is generally 4500 4000 to 800. तो ये lambda 0 visible वाला है. तो इससे कम चलेगा क्या इससे ज्यादा चलेगा? This is threshold. So other wavelength should be lesser than this or greater than this? Lesser. Yes, sir. Lesser means ultraviolet will work out, no? Whatever may be the intensity. So 50 watt ultraviolet B is the correct answer. All infrared will not be possible to emit because 5200 falls in visible. That is our threshold. 40. Light of two different frequencies. This photon has energy of 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively. They emit light if from the metal whose work function is 0.5 electron volt. Then the ratio of maximum speed. अभी डायरेक्ट कर देता हूँ. Ratio of maximum speed मतलब ये v1 square upon v2 square directly समझ में आया क्या किया मैंने? Half m I cancel directly. I wrote Ke max. Okay. Yes, sir. So this line you follow. I wrote directly without writing formulas so that I can save the time. Yes, Rahul, have you followed? Yes, sir. Okay. So 1 minus 0.5, 2.5 minus 0.5. So v1 upon v2 square is 0.5 upon 2. 0.5 into 4 is 2, na? So v1 upon v2 will become 1 is to 2. 1 is to 2 is nothing but B. Option B. None. Okay, 44. The slope of stopping potential versus frequency graph is this. Ke max is h nu minus 1. E into stopping potential is h nu minus work function. So h nu upon E minus work function upon E. So
This is of the type y equal to mx plus c, m equals to h upon e slope. I have already explained you earlier also. So slope of this stopping potential versus frequency graph is h upon e, option B. Done, sir. The stopping potential of frequency graph is given as shown. Photoelectric work function of A and B. The graph shows work function of A is greater. What you can see, this is work function of A, this is work function of B. So which work function is greater? A is less than work function of B or not on the graph? Hello? Because A is cutting less intercept as compared to B. Hello? Yes, sir. So work function of A is smaller than that of B option. Done, sir. Okay. Right. The maximum kinetic energy of photoelectron emitted from the surface is how much? When photon of energy is 6 electron volt incident on it. Sorry, maximum kinetic energy they are telling 4 electron volt. A maximum is 4 electron volt. What is stopping potential? See, Ke max, we know it is E into stopping potential, unit is joule. So when you divide this by E, unit will become electron volt. So I had told you once, you can remember kinetic energy in electron volt unit is nothing but potential. So no need of calculation. Directly I can write Vs is 4 volt. You followed this line? Yes, sir. Directly you can remember kinetic energy is stopping potential when it is in electron volt. So direct 4 volt is our answer.
Done, sir. When light of wavelength when light of wavelength 300 nanometer falls on photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. So this becomes our threshold. For another emitter, however, 600 nanometer wavelength for another emitter, 600 nanometer is required. What is the ratio of work function? Work function of first upon second is reciprocal of threshold wavelength. So 600 upon 300 is 2 by 1. This is the answer. 2 is to 1. Option C. 47. Number of ejected photoelectron increases with increase in intensity. That's it. Complete then 48 times starting. This is the only difficult one. Done, sir. Okay. 49th. In the emissive cell, then the wavelength, exciting wavelength means incident wavelength, is lambda, the fastest electron is emitted has velocity v. If it is changed to 3 lambda by 4, then speed of fastest electron will be how much? What is same in this case? Is the material on which photoelectrons are emitted, that is same? Hello? Yeah. The material on which these photoelectrons are incident, are they same? Same ही है ना, खाली wavelength छोड़ के. Yes, sir. So Ke is hc by lambda minus work function. So work function will be same, whatever may be the wavelength, because emitter is same. So can I say Ke1 is hc by lambda minus work function, and Ke2 will be hc upon 3 lambda by 4 minus work function, that is Ke2 is 4 hc upon 3 lambda minus work function. Okay, any doubt till this? No, sir. See, we want to eliminate work function and get relation of velocities. That means somehow work function have to eliminate. So what I'm writing Ke2 is 4 by 3 hc by lambda minus work function value I'm writing from first one. Can I say this work function will be hc by lambda minus Ke1? Okay. Hello? Hello? Yes, sir. So Ke2 will become 4 by 3 hc by lambda four by 3 hc by lambda minus work function. Work function is Ke minus this minus hc by lambda plus we want relation in velocities. 1 minute. 48 we are doing.
first wala velocity is given v. K E is hc by lambda minus work function. Ke1 is hc by lambda minus work function first. Ke2 is hc by lambda. Lambda is given 3 lambda by 4 minus work function. So Ke2 is 4 hc by 3 lambda minus work function. So I will eliminate hc by lambda. The reason we have to connect kinetic energy in terms of some ratio. So Ke2 is 4 by 3. hc by lambda is Ke1 plus work function minus work function. So Ke2 is 4 by 3 Ke1 plus 4 by 3 work function minus work function. So Ke2 is 4 by 3 Ke1 plus 1/3 of work function. That means Ke2 is greater than 4/3 of Ke1. Now half m v2 square is greater than 4 by 3 half m v1 square. Half m you cancel, taking square root, this will become 4 by 3 raised to half into v1. Check, we have this option. 4 by 3 raised to half, C option. C. Sir, D option, no? D option, D. Greater than B and D. Equal to and greater than D. Yes, shall I clear? 1 minute. Okay. Done. 49, repeated question. Photoelectric cell converts light energy into electric energy. अभी दो ऑप्शन एक ही है, मिस्टेक हो गया है, तो either you write B and D, this one and the same. 50th, can you all tell me the answer? 50th? Can you tell the answer? So much time in 50th, just look the graph and tell the answer. Sir, C. C is the answer, yes. And all homework sum is homework for you. Tomorrow we'll discuss. Now two sums I'm sharing on the group. It was asked by Aryan. I'm just sending it on the group on atoms, molecule, nuclei. Just see whether you can manage. I'm just sending on the group. So your homework is these two sums.
and electrons, photon. Tomorrow first we'll discuss all this, and if we get the time, we'll start with new chapter. That chapter is semiconductor. Electromagnetic wave ka I will send the recorded lecture. You have to go through one recorded lecture every day. It is theory. If doubt comes, you'll ask. If not, you have to buy the theory. So that's all for today. Tomorrow is Friday, I think.